Hello and welcome to the YouTube channel of RankerBuzz. Today we will talk about the legal current affairs and a very important judgment which has been pronounced by the Honorable Supreme Court recently in the last week. So let's start with the today's class. So today we are going to discuss about a case that is State of Jharkhand versus Shailendra Kumar Rai 2022. So this case is very important and it has been decided by the Honorable Supreme Court, and this case in particular is related to the two-finger test. Two-finger test which has recently been banned by the Honorable Supreme Court. Supreme Court ने यहाँ पे इसके ऊपर एक बैन लगा दिया गया है that such a test cannot be conducted, and किन लोगों पे ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो वो अगर हम जाने तो it was conducted on the rape survivors, or we can say the rape victims, to confirm whether the rape has been committed or not. So this test is basically meant for this particular purpose. So now let's coming to this particular case and what exactly happened. So we have to go back to the year 2006 when an important judgment was pronounced by the session court in the state of Jharkhand. तो सेशन कोर्ट्स ऑफ झारखंड की अगर हम बात करें तो वहां पे जब ये केस आया एंड the trial happened and completed, and after that उसके बाद जब सजा सुनाने की बारी आई, then जज ने वहां पे उन्हें दोषी पाया कि भाई ये कई सारे सेक्शंस में दोषी हैं, जिसमें से एक जो है वो सेक्शन आपका 376 भी था ऑफ आईपीसी, which talks about the punishment of rape. Punishment of rape. And for that, the court pronounced the judgment and said that there will be about 10 years of rigorous imprisonment. 10 years of imprisonment to the accused here. वहां पे ये सजा सुना दी गई इन सेक्शन 376. देयर वर सम अदर सेक्शंस आल्सो, क्योंकि यहाँ पे रेप हुआ था और जो विक्टिम थी उसको यहाँ पे जला के मार दिया गया था, एंड ड्यू टू द बर्न्स शी कुड नॉट सर्वाइव, और उसकी जो है बाद में डेथ हो जाती है. तो यहाँ पे 302 का भी मामला था, मर्डर का भी मामला था, एंड देयर वाज रेप आल्सो. सो यहाँ पे सेशन कोर्ट ने माना कि डेफिनेटली यहाँ पे जो है इस तरीके से मौत हुई है, यहाँ पे मर्डर भी हुआ है, एंड यहाँ पे जो है रेप का केस भी यहाँ पे बनता है. ठीक है. सो बेसिकली इन द जजमेंट विच वाज प्रोनाउंस्ड इन द ईयर 2006, as I told you, in the year 2006 it was pronounced by the session court कि भाई ये सजा को माना जाता है, और माना जाता है कि इसने जो है रेप किया और यहाँ पे मर्डर किया, ऐसा सेशन कोर्ट जो है 2006 में ये बात कहता है. Then this case was further appealed to the Honorable High Court. Appealed to the High Court of Jharkhand. Then what happened in the High Court of the Jharkhand, that when this case went to the High Court looked into it, taking into consideration all the facts and circumstances and the evidences which were collected. उसके बेसिस पे वहां पे उस अपील को, वहां पे रिक्वेस्ट को जो है अपील की, उसे एक्सेप्ट करते हैं और उस केस को सुनते हैं. बेसिकली यहाँ पे जो था रिस्पोंडेंट वेंट टू द हाई कोर्ट झारखंड में, वो गए थे, एंड आफ्टर हियरिंग ऑल दोज हियरिंग्स इन द ईयर 2018 the day came when the High Court of Jharkhand basically pronounced the judgment from its bench
और वहां पे जो है कोर्ट ने जो किया, कोर्ट ने जो सेशन कोर्ट का डिसीजन था, सेशन कोर्ट्स डिसीजन वाज सेट असाइड। यहाँ पे जो है सेशन कोर्ट का जो यहाँ पे डिसीजन था उसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया, एंड ऑल्सो एंड एक्विटेड एक्विटेड द रिस्पोंडेंट। और यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है उसको छोड़ दिया गया, टेक इन टू कंसिडरेशन सम फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस। तो वो कौन से रीजंस थे, व्हाट वर द रीजंस फॉर विच द Honorable High Court took this decision and released that particular person or acquitted that person. So, what were the reasons behind such an acquittal? So, when we look at the reasons, तो इसमें कहा गया the family members of the deceased were declared to be hostile witnesses. कहा the family members of the deceased were declared to be hostile विटनेसेस। तो हॉस्टाइल विटनेस का मतलब है कि वो जो है उन्होंने अपना बयान बदल दिया और वो हॉस्टाइल हो गए, वहां पे जो अपने पहले बयान था उससे वो पलट गए। दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हिच वाज टेकन टू कंसिडरेशन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। देन फर्दर it says that the doctor which was there who who was examined in the court, that Dr. Pandey stated in his एग्जामिनेशन इन चीफ, जो एग्जामिनेशन इन चीफ हुआ कोर्ट के अंदर, उसमें उन्होंने कहा दैट द डाइंग डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड इन हिज प्रेजेंस, कि भाई जो डाइंग डिक्लेरेशन है, डाइंग डिक्लेरेशन वाज रिकॉर्डेड इन हिज प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस में जो है डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया। हाउएवर he contradicted himself during the cross examination। अब ये तो बात हुई कि भाई जो क्रॉस एग्जामिनेशन की बात, ये सॉरी, दिस इज एग्जामिनेशन इन चीफ। जब चीफ हुआ तो उस टाइम पे तो इन्होंने बोला कि भाई मेरे सामने डाइंग डिक्लेरेशन दिया गया था, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, मींस चीफ मींस कि भाई जब जो विक्टिम की साइड से वकील थे उन्होंने जब इनसे सवाल जवाब किए तो इन्होंने कहा भाई डिक्लेरेशन जो है, डाइंग डिक्लेरेशन मेरे सामने लिया गया, बट ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, जब सामने वाली पार्टी ने क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू किया तो वहां पे इन्होंने दूसरा बयान दिया। ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन उन्होंने वहां पे अपनी बात से वो मुकर गए, वेर ही स्टेटेड दैट ही वॉज विद अनदर पेशेंट। उन्होंने कह दिया भाई कि मैं तो उस जगह पे मौजूद ही नहीं था, आई वॉज विद सम अदर पेशेंट। ठीक है, मैं तो किसी और पेशेंट को अटेंड कर रहा था जिस समय पे ये रिकॉर्ड किया गया। सो देखेंगे यहाँ पे कि भी जो डॉक्टर था वहां पे वो भी यहाँ पे उन्होंने भी अपना बयान बदला, दोनों जगह अलग अलग बयान दिए गए। देन इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन पोज्ड टू हिम ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन, डॉक्टर सेड that the victim's family had received advice that the victim ought to be taken to Bokaro Burn Hospital for better treatment, but they did not do so। तो कहता है भी कि इनके पेरेंट्स को, जो भी इनके परिजन हैं, उनको पहले ही बोल दिया गया था दैट शिफ्ट दिस पेशेंट टू सम अदर बिग हॉस्पिटल, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, टू द बोकारो हॉस्पिटल, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया जिस वजह से ऐसा हुआ, बिकॉज बर्न इंजरीज थी काफी सारी उन्हें, जिस वजह से ये सारी चीजें हुई। तो एक ये बात थी। देन द स्टेटमेंट मेड बाय द डिसीज इज नॉट एडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन। कहता है कोर्ट, बाय रिलाइंग अपॉन मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश केस जो है उस पर रिलाय करते हुए कोर्ट कहता है दैट स्टेटमेंट
made by the deceased is not admissible, कि भाई वो admissible ही नहीं है, not admissible as a dying declaration due to this decision, जो डिसीजन है मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। तो कहता है जो भी स्टेटमेंट डिसीज द्वारा दिया जाएगा इज नॉट एडमिसिबल एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, उसे डाइंग डिक्लेरेशन की तरह हम यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन की तरह ट्रीट करने से मना कर देता है। देन एक और यहाँ पे विटनेस थी, एक और विटनेस थी जिनका नाम था डॉक्टर मीनू मुखर्जी। डिड नॉट फाइंड दिस अनदर डॉक्टर, she did not find any signs of did not find any signs of sexual intercourse after conducting the two finger test। तो यहां पे इन्होंने भी कहा कि भाई ऐसा कुछ यहां पे पाया नहीं गया है। So taking into consideration all these things, all these points which I have discussed, the High Court actually acquitted the the convict here। यहाँ पे उसे acquit कर दिया गया, छोड़ दिया गया सभी charges से। So this is what happened in the High Court when this case went to the High Court. Now let's see what actually happened in the Honorable Supreme Court last week. So this case was again further went to the Supreme Court. Supreme Court में ये case आया, and in Supreme Court this case was heard by the bench of Dr. D.Y. Chandrachud and Justice Hima Kohli. Dr. D.Y. Chandrachud is going to be the next CGI very soon, and so this two-judge bench heard this particular case and said that it is unfortunate. It is they said this incident to be unfortunate that cases related to the sexual assault survivors was subjected to this two finger test. Why unfortunate? Because it is subjected to two finger test which has no scientific backing, जिसका कोई भी पीछे से साइंटिफिक बैकिंग नहीं है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इवन दो ये कंडक्ट किया जाता है और इस बेसिस पे कह दिया जाता है कि रेप हुआ या नहीं हुआ। सो यहां पे इन्होंने कहा, द बेंच हेल्ड that the two finger test or the pre-vaginal test must not be conducted as it has no scientific basis। कहते हैं there is no scientific basis to this test, no scientific basis, so why this test has been conducted? So that is why this matter was taken seriously by the Honorable Supreme Court and decided later। So साथ ही सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक और चीज कहता है that इस तरीके की जब चीजें होती हैं, such kind of tests are conducted, so basically ये क्या करते हैं, it actually re-traumatizes and re-victimizes the woman who has been sexually exploited or assaulted। So
यहाँ पे कोर्ट इस बात को कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो टेस्ट है इस तरीके के, ये कहीं ना कहीं फर्दर री ट्रॉमेटाइज करते हैं, री विक्टिमाइज करते हैं वुमेन को हु हैज ऑलरेडी बीन सेक्सुअली असॉल्टेड और एक्सप्लॉइटेड। उनको हम फर्दर एक ऐसी चीज में घसीट देते हैं जिसके अंदर कि अगेन इट इज ऑन हर डिग्निटी एंड एवरीथिंग, ऑलरेडी शी इज सो मच डिस्टर्ब्ड एंड नाउ वी आर कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ टेस्ट। सो अब यहाँ पे इस वजह से इन सब चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इस पे बैन लगा दिया है। सो नाउ व्हाई दिस इज बीन बैंड, सो व्हाई इट इज बीन बैंड, तो आखिर क्यों इस पे बैन लगाया गया है, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन लगाया है, क्या चीजें बोली। सो हियर सुप्रीम कोर्ट सेड that explaining that so-called test is based on the incorrect assumption that a sexually active woman cannot be raped। तो इसके अंदर क्या यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई इस चीज को एक्सप्लेन किया, द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली एक्सप्लेन that this particular test is basically based on what, based on this perception, based on that assumption। एक assumption है कि भाई जो भी सेक्सुअली एक्टिव जो वुमेन है, सेक्सुअली एक्टिव वुमेन कैन नॉट बी रेप्ड, कि भाई जो सेक्सुअली एक्टिव है पहले से, वो रेप, उसका रेप नहीं हो सकता। सो दिस इज एन अजम्पशन विच इज बीन टेकन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो कोर्ट कहता है ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। कोर्ट ऑब्जर्व दैट वेदर अ वुमेन इज हैबिचुएटेड to the sexual intercourse or habitual to sexual intercourse is irrelevant। सुप्रीम कोर्ट फर्दर कहता है that it is irrelevant even if the woman is habitual of sexual intercourse, it doesn't matter, it is irrelevant in this particular case. If somebody is habitual of going into such kind of relationship, that doesn't mean that she can be raped or what. So this was noted by the honorable Supreme Court. Then further the Supreme Court said nothing could be further from the truth। A woman's sexual history is wholly immaterial। कहता है कि it is immaterial while adjudicating। जब हम कोर्ट में डिसाइड कर रहे हैं तो we should not take into consideration these things, that whether she is sexually active or not, even if she is active, then she can be raped, that is not right। Further it says that probative value of a woman's testimony does not depend upon the sexual history। उसकी sexual history पे हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं कि भाई क्या इसके साथ हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। So फिर then further it also says कि भाई it is we are this decision by the High Court has been taken in such a sense, the things like it is a patriarchal and sexist to suggest that a woman cannot be believed when she states that she was raped merely because she is sexually active, merely because she is sexually active। So Supreme Court clarified that this is nothing but a patriarchal mindset and a sexist mindset, that if some woman is sexually active, that means rape cannot happen with her। So these were the harsh statements given by the Honorable Supreme Court, and therefore further directions are issued to the principal secretaries of the different states and other stakeholders in the state to ban this kind of activity, and if such kind of activity is been done, then the Supreme Court
made it a punishable offense. सुप्रीम कोर्ट मेड इट पनिशेबल. कहा दैट अगर कहीं पे इस तरीके की घटना पाई गई, कहीं पे टू फिंगर टेस्ट किया गया, और इवन दो इट इज बैंड, अब ये बैन कर दिया गया, इसके बावजूद भी अगर किया गया, then that person who is conducting or indulged in the such thing will be guilty of misconduct. उसको मिसकंडक्ट का गिल्टी यहां पे माना जाएगा. So this was about this particular judgment, that is State of Jharkhand versus Shailendra Kumar Rai. So why it is important to know about this judgment? Because this is, in this particular case, this particular test which has been done from many decades to prove a case of rape. So this has been banned on on certain reasons, and Supreme Court clearly said that there is no backing to the this particular this particular test. कोई भी scientific backing इसके पीछे नहीं है, कोई scientific reasoning नहीं है. So we cannot allow such a thing, और उसके बेस पे हम ये डिसाइड करें कि whether that that woman is been raped or not. So we cannot rely on such an unscientific process, and it is also not sustainable that if a woman is sexually active, the rape cannot be committed on her. This is a patriarchal and a sexist kind of thinking which is there in our minds. So that is why this particular test has been banned in India, and it has further been directed to the stakeholders that implement this particular judgment and spread this thing to the different authorities, hospitals, and everywhere, that such a test should not be conducted anymore to prove the case of rape. So this was it from the today's session. I hope you all have understood everything, whatever I have told you. We'll come up with more such legal current affairs and the judgments from the Honorable Supreme Court as well as from the High Courts on the regular basis. So thank you so much. Good night. Take care. Bye-bye, everyone.